इसलिए प्रारंभ में वो जब आता है, वो शिष्य उपनिषद की बात कह रहा हूं मैं, तो जिज्ञासु होता है। उसमें जिज्ञासा होती है कि गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, ये गुरु हैं भी कि नहीं है, ये गुरु मेरा कैसा कल्याण कर सकेंगे। चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, गुरुदेव मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप मेरा व्यापार बढ़ा के देखिए। तो गुरु ऐसा नहीं, कर्म फूटे तेरे, मैं तो व्यापार नहीं बढ़ाऊंगा, ऐसा तो कह नहीं सकता। ऐसा कैसे कहेगा? क्यों चरण छुए या 5 रुपए रखें, करो अच्छे आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ही कहेगा गुरु। माँ बाप को तुम आशीर्वाद मांगो, माँ बाप भी ऐसा कहेंगे, चलते बच्चे ठीक हो जाएंगे। अब उसके बाद महीने भर फिर रहता है, तो आपने कहा व्यापार में दुगना हो जाएगा, हुआ ही नहीं, वैसा वैसा। तो मैंने तुम्हें कब कहा था दुगना हो जाएगा? मैं तुम्हें गाली भी नहीं दे सकता था, मगर तुम्हारे मेरे बीच में कोई संपर्क भी नहीं बना। तुम चरण छूओगे, मैं आशीर्वाद दूंगा। ये बिल्कुल तटस्थ बात कह रहा हूं, जो कि कड़वी बात है, जो तुम्हें मुझे नहीं कहनी चाहिए। मगर मैं तुम्हें अंधेरा की पट्टी बांध करके घुमाना नहीं चाहता। अगर मैं शिष्य बनाना चाहता हूं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए शिष्य तो क्या है, वहां पहुंचाना चाहता हूं। क्यों गुरु को प्रेमी कहा है और क्यों शिष्य को प्रेमिका कहा है, कारण क्या है? इसलिए सबसे पहले जिज्ञासु होता है, उसके मन में कई तर्क वितर्क पैदा होते हैं। ये मंत्र है भी कि नहीं, इस पत्रिका में लिखे हुए सब सही भी है कि नहीं, होता भी है कि नहीं, आके तो हमने देखा नहीं गुरु जी, ये देखो 600 रुपये लक्ष्मी मंत्र की, मतलब 100 माला तो फेर ली, हुआ तो कुछ नहीं गुरु जी, लक्ष्मी सामने आई नहीं। उसके तो ये जो माला फेरी कंप्लीट हुई, वो हीरो के हार भर करके थाल लेकर के आवे, चाहे बच्चे क्या कर रहा है, तू माला मत फेर, बंद मत कर, बस ये ले ही रहे, खत्म कर खेल, मुझे दुख मत दे। वो तो ऐसा सोच रही लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी आती नहीं। तब उसका संदेह और बढ़ जाता है कि मंत्र गलत है। मंत्र कोई गलत नहीं है, ना देवता गलत है, तुम्हारी जिज्ञासा है और जिज्ञासा क्लियर नहीं हुई है। अभी तक तुम प्रारंभिक स्टेज में हो, इसलिए तुम शिष्य कह रहे हो, मगर वो प्रारंभिक स्टेज है तुम्हारी। तुम्हारे मन में तर्क वितर्क है। जिज्ञासा के बाद में दूसरा शब्द, अगली स्टेज जब आती है, जब उसकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, तब तो गुरु के पास आता है, तो गुरु उसको समझाने की कोशिश करता है, मगर उसको समझ में आती नहीं, क्योंकि उसका तो एक ध्येय है कि मेरे जीवन में ये सब घटनाएं घटनी चाहिए। उसका ध्येय कुछ नहीं, लक्ष्मी साधना करने का नहीं है। उसका ये भी ध्यान नहीं कि गुरुजी मेरे हृदय में बैठे, ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। उसका तो एक ही है कि मतलब मैंने ये मंत्र जाप करूं तो मेरा ऐसा हो जाना चाहिए, जो मंत्र जाप पूरा किया तब ऐसा हो जाना चाहिए, जो लक्ष्मी साधना की लक्ष्मी मेरे घर में आ जाना चाहिए, स्वास्थ्य की साधना की मेरी तबीयत बिल्कुल एकदम जवान 25 साल का हो जाना चाहिए, और कोई ऐसा ताबीज पहना और पति पत्नी की लड़ाई झगड़ी खत्म हो जाना चाहिए, मैं गालियां भरी दूं, पत्नी बेचारे हाथ जोड़ के खड़ी रहे, ऐसा होना चाहिए। अब 1993 में तो ऐसा होगा नहीं, पत्नी भी तुमके सामने खड़ी होगी, जब तुम खड़े होंगे तो वो बेचारी खड़ी होगी सामने। अब वो तो है नहीं कि आज से 100 साल पहले वो पतिव्रता कर नीचे की हुई खड़ी रहे कि हाँ पतिदेव आप चाहे शराब पियो चाहे कुछ भी करो, मैं तो पतिव्रता हूं, मैं बोलूंगी नहीं। अब वो जमाना नहीं रहा। हकीकत ये है, प्रैक्टिकल चीज ये है। इसलिए दूसरी स्थिति जब आदमी बनती है, तब उसमें चैतन्य भाव बनता है। चैतन्य भाव, वो जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त होती है उसकी। बार बार रगड़ खाता है गुरु की, बार बार उसके संपर्क में आता है, तब उसके भाव में एक चैतन्यता आती है कि ये सब चीजें गौण हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज है जो मुझे प्राप्त करनी चाहिए। ये तो वैसी हुई कि मैं समुद्र के किनारे जाऊं और कंकर पत्थर लेकर के खड़ा हो जाऊं। तुम क्या ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए प्राप्त कर लोगे? अगर मान लो गुरु बहुत खुश हो जाएगा, कोई ऐसी साधना अपनी तपस्या का अंश दे देगा, तो 25-50 हजार ले लेगा तुमसे, दे देगा तुम्हें, या तुम्हारे घर के कलंक मिटा देगा। जब ऐसे ही हो तो कंकर पत्थर चुन करके तुम इकट्ठे हो गए। और समस्याएं, जहां तक प्रश्न है, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, मैं तो अपनी तरफ देता हूं कि 1 महीने का टाइम भी देता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ के लाओ जिसको कोई तनाव टेंस नहीं हो, कोई समस्या हो ही नहीं। बिना समस्या का कोई आदमी ले आओ तो मैं तो तुम्हें भी भगवान की तरफ पूजूंगा, उसको भी पूजूंगा, सही नहीं? क्योंकि अगर तुम कोई समस्या नहीं करना चाहते, तुम्हारा पड़ोसी ने जिंदा नहीं रहने देगा, वो कोई कोई समस्या तेरे घर पर फेंकेगा, तो समस्या पैदा कर देगा। कुछ नहीं, पानी गिरा, ऊपर वाला नीचे पानी गिराएगा, कुछ हेडेक होगा, नहीं तो गवर्नमेंट तो अफसर है वो तुम्हारी हेडेक पैदा करेगा, समस्या तो पैदा होगी। यह युग ही समस्याओं का है। इसलिए इस समस्याओं के लिए तुम गुरु के पास में आते हो तो तुम्हारा एक जिज्ञासु भाव हुआ, जिसमें तुम गुरु शिष्य का संबंध नहीं बना। जब चैतन्यता आती है तो सोचते हैं ये सब जरूरी है। मैं नहीं कहूंगा आप इनको छोड़ दीजिए। कई लोग कहते हैं गुरु जी मैं सब घर छोड़ना चाहता हूं, अब मैं छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ये तो कायरता है, पलायन है। तो उसमें जूझो खड़े हो ग्रस्त में, मैं उसके बावजूद भी अपनी थैली हीरे मोतियों से भरो, और वह है कि तुम्हारे हृदय में गुरु कैसे स्थापित हो, तुम कैसे उस भगवती जगदम्बा के दर्शन साक्षात कर सको। अगर तुम्हारे मन में यह है कि मैं जगदम्बा की साक्षात इसलिए करना चाहता हूं कि जगदम्बा मुझे 5 करोड़ रुपए दे दे, तो 5 करोड़ वर्ष तक भी जगदम्बा तुम्हें दर्शन नहीं दे सकती। तुम साधना क्या भली कितनी साधना करो, जब तुम निस्वार्थ भाव से कुछ कार्य करोगे तब कुछ प्राप्त हो पाएगा। तुम्हारा स्वार्थ रहित चिंतन होना चाहिए इस फील्ड में। स्वार्थ अपनी जगह है, रोटी अपनी जगह है, कपड़ा अपनी जगह है,
रोटी की जगह तुम कपड़ा नहीं खा सकते, कपड़े की जगह रोटी नहीं पहन सकते। इसलिए अपने गृहस्थ की समस्या अपनी जगह है, इन साधनाओं में बढ़ने की स्थिति अपने आप में अलग है। दोनों को आप मिक्स मत करिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वह भी जीवन में जरूरी है और ये भी जीवन में जरूरी है। और तुम कहो कि गुरुजी ये जब समस्या मिटेंगी नहीं, जब समस्या मिट जाएंगी तो मैं साधना कर लूंगा। तो मैं तुम्हें कहा कि तुम तो महीना भर क्या 5 साल दे देता हूं तुम्हें, कोई बिना समस्याओं का आदमी लिया ना मेरे पास। समस्या तो रहेंगी, पहले समस्या ये रहेगी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है। शादी हो जाएगी तो पत्नी खुश नहीं है, पत्नी खुश नहीं है। पत्नी खुश होगी तो माँ कहेगी कि मेरा पोता होना चाहिए, पोता होना चाहिए। पोता हो जाएगा तो पोता बीमार हो गया, बीमार हो गया। अब बता, समस्या तुम खुद पैदा की। अब गुरुजी मतलब ये समस्या पहले 1 से 4 हो गई गुरुजी, तो ये सब मैं तो तुम्हें दी नहीं समस्याएं, तुमने पैदा की। अब वो लड़का बड़ा हो गया तो अब उसकी शादी की चिंता, शादी हो गई तो लड़की अच्छी नहीं मिली, फिर दहेज की चिंता। ये मतलब ये लड़का मेरा BA पास करवाया, ये तो साला 500 रुपए दे रहा है, इससे क्या होगा। समस्या तुम खुद पैदा कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें समस्या दी नहीं है। उन समस्याओं को पैदा करके मेरे पास तुम आ जाते हो कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा। गुरुजी मैं लड़का नहीं हो रहा है, आप कुछ करिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम खुद करो अपने लड़के के लिए, मैं तुम्हें क्या के लिए, मैं ये काम भी मेरा तो है नहीं कि गुरुजी मेरे लड़के के लिए अब आप भी प्रयत्न करिए। ऐसी स्थिति मत करिए। उन दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धाश्रम जाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। According to Shishyopanishad, when a disciple comes to a guru, he is curious to know about him. He wants to know what is a guru, what is a disciple, is this guru real, how can he help me? Then he decides to test the guru once. He says to the guru, Gurudev, my business is on a downslide, please help me. Now a guru cannot say that he cannot do anything or that the disciple's luck is itself bad. The disciple has touched the guru's feet and offered some dakshina. So the guru says, I bless you, everything shall be fine. If you seek the blessings of your parents, even they shall bless you with better luck. After 1 month, the disciple returns to the guru and says, Gurudev, you had said that my income shall double, but nothing has happened. Now, as a guru, I could not have abused you, and neither did any close bond form between you and me, so that I could have helped you. If you touch my feet, I shall surely bless you. This is the bare fact. It may sound bitter and maybe I should not say this to you, but I don't want to tie a cloth around your eyes and leave you to wander about. I want to lead you to your real destination. The disciple is, in the beginning, very inquisitive. Several doubts and suspicions arise in his mind, like whether the mantras have any significance, whether the tantra processes given in the magazine are true or not. He says to the guru that he has chanted the mantra of Sahasrarupa Lakshmi 10,000 times, but Lakshmi did not appear. He thinks that as soon as he completes the chantings, Lakshmi should appear with a tray filled with diamonds and give it to him. But Lakshmi does not appear, and doubts arise in his mind whether the mantra is correct or not. But in reality, neither the mantra nor the gods are wrong, rather your own concepts and perceptions are not clear. There are doubts in your mind and you are still in the beginner's cradle. After this stage of inquisition ends, a person becomes a disciple. When all the questions, all concepts become clear, then the next stage sets in. The disciple comes to the guru and the guru tries to explain everything to him. But at first, the disciple does not understand anything because the only aim of his life till then is to achieve all material comforts. His aim is not to accomplish Lakshmi sadhana and
neither is it to establish the Guru in his life and soul. He only wants that his wish should be fulfilled when he chants a mantra. When he performs Lakshmi sadhana, he only wishes for wealth. When he performs a sadhana for good health, his only desire is to become young like a 25-year-old. He keeps wishing for some miraculous charm with the help of which he could subjugate his wife. Now this is almost impossible in the 20th century. If you become rude, your wife shall behave even more rudely. You can't expect her to stand with her head bowed down before you all the time. Those times have gone and the reality is before you. In the second stage, all curiosity dies out and the disciple develops divine thoughts. When he comes closer to the Guru, he becomes spiritually enlightened. He comes to know that all that he had been wishing for was insignificant and there are other better things which he should acquire. If I go to the seashore, then what is the use if I just collect stones from its beach when inside the sea I can obtain pearls? If you stick to your material wishes, then you may obtain 20,000-25,000 rupees at the most. And if the Guru is very much pleased, he may bless you with a part of his sadhana powers and thus you may obtain 25,000 to 50,000 rupees or your family quarrels may stop. But obtaining such petty things is like collecting stones and pebbles from the seashore, which in fact hides richer treasures. As far as settling of problems is concerned, then I challenge you and give 1 month's time to go and find a person who is totally tension free. If you find such a person, then I am ready to worship you as God. This is an age of problems. Your own neighbor shall not let you live in peace and shall keep creating trouble for you. He may throw stones at your house. He may throw water into your house. He shall be a constant headache for you. If he remains docile, then some government official may start troubling you. This shall go on. If you go to the Guru with your headaches, then this shows only your inquisitive nature. This is not an evidence of a relation of a Guru and a disciple. But when you become enlightened spiritually, then you realize the truth. I am not asking you to leave everything. Some people say that they want to renounce their families and want to give up everything. But this is not a solution at all. This is cowardice and running away from responsibilities. You should face all problems and still rise high in life. The chief aim of your life should be to establish the Guru in your heart and to achieve the realization of Bhagavati Jagadamba, the Divine Mother. If you just wish to achieve the realization of Goddess Jagadamba for obtaining 5 million rupees from her, then you may perform sadhana for 5 million years, but the Goddess shall not appear before you. You may perform as many sadhanas as you wish, but you shall achieve success only when you accomplish them with an unselfish motive. Your thoughts, your aim must not be selfish. Bread and cloth are two distinct objects. You cannot eat cloth and you cannot wear bread. Similarly, the material needs are separate from the spiritual aspirations and the two should not be intermixed. Sadhanas and material needs are distinct and both have their own significance in life, but they should be kept apart. If you say to the Guru that you would perform sadhana when your problems are solved, then I give you not 1 month, but 5 years to go and bring back a person who is tension free. Problems shall always remain. First you shall be anxious to marry. When you marry, your wife shall remain dissatisfied. If she becomes happy, your mother shall wish for a grandson.
When a son shall be born, he shall become ill. This goes on, problems never end, and it is you who create them. You will say that you have this problem, that earlier you had just one problem and now you have four. I did not give these problems to you. You created them yourselves. Your son will grow up, then you shall start worrying about his marriage. When he shall be married, you shall feel that his wife is not good-natured. You shall feel troubled when the son whom you educated yourself gives you only 500 rupees from his income. Is there any end to it? You have yourself created this state of chaos. I have not pushed you into it. You come to me and say, Guruji, what should I do now? You do not have a son and you come to me for help. What can I do? You shall obtain a son with your own efforts. I can't do anything. Do not create such a situation. Try and understand the two paths. Your problems and the solutions to them constitutes one path. The spiritual elevation of life is another path. The second path is more significant as it is the way to activation of Kundalini, the way to Sahasrar, the way to realization of God, the way to establish the Guru in yourself, the way to salvation, and the way to Siddhashram. Along with moving on the first path, you should also strive to progress on this second path. And there are three conditions for moving forward on this path.